So we'll start by making a magic circle. सबसे पहले हम एक magic circle बनाएंगे. We'll wrap the yarn on our ring finger and little finger. Hold the yarn end with your thumb. Take the other yarn end and hold it in between your index finger and middle finger. Take the needle, put it under the loop and chain one. Pull out the fingers and your magic circle is ready. ये इस तरीके से आप magic circle बना लेंगे. Now we'll chain 3, 1, 2, 3 and we'll work in this magic circle. इस magic circle में हम work करेंगे अब. So we'll make 2 double crochet stitches. Chain 3 करने के बाद हम 2 double crochet stitches बनाएंगे. 1, 2. Then we'll chain 2 करेंगे. फिर से 3 double crochet stitches बनाएंगे इसी में. फिर जैसे हमने पहले बनाया था. So we'll make 3 more double crochet stitches in the magic circle. Then again we'll chain 2. फिर से chain 2 करेंगे and we'll make 3 more double crochet stitches in the magic circle. 3 और double crochet stitches बनाएंगे. 2 and 3. Then we'll chain 2. फिर से chain 2 करेंगे and we'll pull and close the magic circle and we'll join onto the third chain. The starting chain 3 we did now. On the third chain we'll slip stitch. तो third chain पे हम slip stitch कर देंगे. Slip stitch onto the next stitch. Next stitch में slip stitch करेंगे. Slip stitch onto the next stitch में slip stitch करेंगे and slip stitch in the chain 2 space. Chain 2 space में slip stitch करेंगे. इसको tightly pull करेंगे ताकि हमारा magic circle close हो जाए. We'll pull it tightly so that the magic circle closes properly. And after slip stitching onto the stitches and in the chain 2 space, now we'll begin our round number 2. So we'll chain 3, 1, 2, 3. अब round 2 में हमने chain 3 किया. 2 double crochet stitches बनाएंगे. 2 double crochet stitches. 1, 2, chain 2, 1, 2 and 3 double crochet stitches in the same chain 2 space. इसी same chain 2 space में 3 और double crochet stitches बनाएंगे and 3. Now chain 1 and go into the next chain 2 space. Next chain 2 space में भी इसी तरीके से 2 sets बनाएंगे. Similarly, like we made 2 sets here, we'll make in the next chain 2 space 1 double crochet stitch, second, third. Now chain 2 and make 3 more double crochet stitches in the same space. तो हमने 3 double crochet stitches बनाई, फिर हमने chain 2 किया और 3 और double crochet stitches इसी same chain 2 space में हमने बनाए. Then chain 1, go into the next chain 2 space. Chain 1 करने के बाद next chain 2 space में भी हम इसी तरीके से 3 double crochet stitches बनाएंगे. We'll make 3 double crochet stitches. Then chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. Two and 3. Then we'll chain 1 and we'll join to the third chain at the top of the starting chain 3 that we made. जो हमने starting में chain 3 बनाया था उसके जो top वाली chain है उससे हम slip stitch कर देंगे. Slip stitch onto the third chain, then slip stitch onto the next stitch. Next stitch जो है उससे slip stitch करेंगे. फिर next stitch से slip stitch करेंगे. Slip stitch onto the next stitch as well and slip stitch in the chain 2 space from where we'll begin our round 3. Now for the round 3, we'll chain 3 again. And now you have to make sure the chain 2 place, this is the corner, the chain 2 place, and this chain 1 place will be the side. तो ये जो chain 2 spaces है ये हमारे corner होंगे तो इसमें 2 sets आएंगे और जो chain 1 space है उसमें एक set आएगा. So now we'll work 1 double crochet stitch
and one more double crochet stitch. So 2 double crochet stitches, then chain 2, 3 double crochet stitches हो गए because ये chain 3 will count as one double crochet stitch, and 3 more double crochet stitches we'll make in the same space. इसी same space में हम 3 और double crochet stitches बनाएंगे. Now 3 double crochet stitches in the next chain 1 space. 3 double crochet stitches इस chain 1 space में बनाएंगे हम. अब फिर से हम कॉर्नर पे आ गए. नाउ वी हैव रीच्ड आवर कॉर्नर विच इज़ द चेन 2 स्पेस, एंड हियर वील मेक आवर कॉर्नर. अब कॉर्नर बनाएंगे यहाँ पे. जो हमारा कॉर्नर है वो हर कॉर्नर इसी तरीके से होगा. एवरी कॉर्नर विल बी द सेम वे, विच इज़ 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, chain 2 and 3 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द सेम chain 2 स्पेस. तो हर कॉर्नर हमने इसी तरीके से बनाना है. Now the chain 1 space we'll make 3 double crochet stitches. Now again we have reached our corner. फिर से हम corner पे आ गए हैं. तो corner will be 3 double crochet stitches, chain 2, 2 chains बनाएंगे, and 3 more double crochet stitches in the same chain 2 space. इसी same space में फिर से हम 3 और double crochet stitches बनाएंगे. तो ये हमारा कॉर्नर हो गया. नाउ chain 1 स्पेस आया. नाउ इन द chain 1 स्पेस अगेन विल मेक 3 डबल क्रोशे स्टिचेस. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे इस chain 2 स्पेस में. और अब जो हमने स्टार्टिंग में chain 3 बनाया था उसकी थर्ड चेन से हम स्लिप स्टिच कर देंगे. स्लिप स्टिच ऑन टू द थर्ड चेन, द टॉप वन. देन स्लिप स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे. एक स्लिप स्टिच नेक्स्ट स्टिच पे करेंगे, नेक्स्ट स्टिच, एंड इन द chain 2 space. So always we have to slip stitch onto the stitches and work from the chain 2 space. Always start your round from the chain 2 space. So this is how, if you see, it started taking the shape of a triangle. So we'll do few more rounds. So let's begin with the next round. You have to just keep on repeating this pattern until and unless you get the desired length, desired size of how long you want it to be or how big you want it to be. So now chain 3 again, 1 2 3, 3 double crochet stitches, 2 double crochet stitches, I'm sorry, chain 2 and 3 double crochet stitches, 2 and 3. So this is our corner. Now in these spaces we'll work only 3 double crochet stitches, 1 2 3. तो कॉर्नर पे हमने 2 सेट्स करने हैं और साइड्स पे हम एक एक सेट करेंगे 3 डबल क्रोशे स्टिचेस का. नाउ इन द नेक्स्ट स्पेस अगेन वील वर्क 3 डबल क्रोशे स्टिचेस. देन नाउ अगेन वी हैव रीच्ड अ कॉर्नर. हम कॉर्नर पे पहुंच गए हैं. सो इन द कॉर्नर अगेन वील मेक 2 सेट्स ऑफ 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, एंड इन द मिडल वी शुड हैव chain 2. सो 3 डबल क्रोशे स्टिचेस हमने किया. नाउ chain 2 and 3 more in the same space, 2 and 3. आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा बना सकते हैं. आपको इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है. नाउ इन द नेक्स्ट स्पेस अगेन वील वर्क 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, 2 3. नाउ इन द नेक्स्ट स्पेस अगेन 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, now in the corner we'll work 3 double crochet stitches, 2 3, chain 2 and 3 more in the same space. तो हर कॉर्नर को आपने इसी तरीके से वर्क करना है. एंड साइड्स में आपने 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनानी है हर स्पेस में. और इसी तरीके से आप इसे जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं या छोटे छोटे बनाकर ज्वाइन कर सकते हैं. अब नेक्स्ट स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे. सो विल वर्क 3 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द नेक्स्ट स्पेस. इन द नेक्स्ट प्लेस हियर द स्पेस अगेन विल वर्क 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, एंड नाउ स्लिप स्टिच ऑन टू द थर्ड चेन. थर्ड चेन पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे. फिर नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे. स्लिप स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट स्टिच एंड द नेक्स्ट स्टिच एज वेल, स्लिप स्टिच,
and in the chain 2 space 1 slip stitch. So this is how it's looking. It's curling a bit, but once it's made, you can just block it. So you can just pull it a bit so that it holds its shape. And I'll complete a couple of more rounds and then I'll show you how it looks. But you can even stop here. You can use different color yarns for each round. That will also give a very nice look. आप अलग अलग कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं हर राउंड के लिए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा. और इसे छोटे छोटे बना के आप जॉइन करके भी बना सकते हैं बहुत कुछ, या इसी को सिंगल को एक बड़ा बहुत बड़ा सा बना सकते हैं. तो अभी मैं थोड़े से राउंड्स और करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर 2 more rows. तो आप इसी तरीके से जैसे जैसे रोज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना बड़ा बनता जाएगा. सो आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल. कीप क्रोशेटिंग, stay happy, stay safe. Thank you so much for watching. Bye bye.